Very good morning, students. Today we are starting with lesson number 5, that is MS PowerPoint more in graphics. Here I have a video for you all through which you can easily understand what are the additional graphics that you can put up into your slides to make your slide look more beautiful and attractive. Okay, so what is graphics? Graphic means inserting images, inserting some videos, audios, some charts. ऑल दीज कम्स अंडर ग्राफिक्स. ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स मीन्स आप ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारी, पिक्चर्स आ जाती हैं, वीडियोज़ आ जाते हैं, साउंड आ जाते हैं, टेबल्स आ जाते हैं, चार्ट्स आ जाते हैं. ऑल दीज थिंग्स दैट मेक योर that make your presentation or your PowerPoint presentation look more attractive and beautiful. All these makes your presentation beautiful. Okay, so in the previous chapter we have already learned about slide layout. Now we are starting with some more features of it. Okay, so have a look into this video. This will help you to understand the chapter very well because it is the video that is based on your book support only. Okay, book web support. And how to insert some more graphics and other objects in the slides. Slide layout. Slide layout is the arrangement of all the objects on a slide. Slide layouts can contain formatting of text, tables, charts, smart art graphics, pictures, online pictures and video. There are 9 basic slide layouts in MS PowerPoint. They are described. Okay, so there are 9 basic types of slide layout in your MS PowerPoint. Within that you can insert the pictures. बहुत सारे टाइप के स्लाइड लेआउट होते हैं, जैसे कि टाइटल स्लाइड हो गया, टाइटल एंड कंटेंट हो गया, सेक्शन हेडर हो गया, है ना. ऐसे करके 9 टाइप्स के आपके स्लाइड लेआउट्स होते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टेबल चार्ट्स इंसर्ट करना है तो उसमें सारे फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए. ओके, सपोज़ आपको सिर्फ पिक्चर इंसर्ट करना है तो आपके पास एक अलग लेआउट होता है. अगर आपको डिवाइड करना है अपनी प्रेजेंटेशन को सेक्शंस में तो उसके लिए भी आपके पास लेआउट होता है. ओके, सो ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट लेआउट्स होते हैं. अगर ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो उसके लिए अलग लेआउट होता है. तो ऐसे बहुत सारे लेआउट होते हैं जिसके हेल्प से आप प्रेजेंटेशन बहुत ईजीली बना सकते हो. Below, title slide. This is used at the starting of your presentation or to divide sections of your presentation. Title and content. This is a default. स्लाइड लेआउट, एज यू ऑल नो, स्लाइड लेआउट टाइटल स्लाइड क्या होता है, जब आपको स्लाइड में सिर्फ टाइटल डालना होता है. फॉर दैट इट इज़ द वेरी बिगनिंग स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन. जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो सबसे बिगनिंग में हमको क्या डालना होता है, टाइटल डालना होता है. फॉर दैट वी यूज़ टाइटल स्लाइड. And most commonly used slide layout. It is used to give topic and its content. जब हमको टॉपिक और उसका कुछ कंटेंट, उसके कुछ डिस्क्रिप्शन डालना होता है तब हम टाइटल एंड कंटेंट लेआउट का यूज करते हैं. Section header. This slide type is used to separate different sections of the same presentation. Rather than using an additional title slide content, this slide layout is used if you wish to show text in addition to a graphic content type. Comparison. It is similar to the two content slide layout, but this you can see here, ये जो फॉर्मेट दिया है स्लाइड का, ये क्या है. अब जब डिफरेंशिएशन टाइप का कुछ लिखना होता है देन इन दैट केस हम इस टाइप की स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, स्लाइड लेआउट का यूज़ करते हैं. इसमें आप पिक्चर्स वीडियोस भी अलग अलग सेपरेटली सेक्शंस में ऐड कर सकते हो. slide type also includes a heading text box over each type of content. This type of slide layout is used to compare two types of the same content type. For example, two different charts show text in addition to a graphic content type. Title only. This slide layout is used if you want to place only a title on the page rather than a title and a subtitle. सिर्फ टाइटल ऐड करने के लिए हम टाइटल ओनली वाला स्लाइड लेआउट यूज़ करते हैं. जब हमको कुछ नहीं डालना है स्लाइड में, सिर्फ एक हेडिंग डालना है, एक टाइटल डालना है, देन इन दैट केस वी यूज टाइटल ओनली. You can then insert other types of objects such as clip art, word art, pictures or charts if desired.
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कभी प्रेजेंटेशन होती है जब स्टार्ट होती है या फिर बीच में कुछ दिखाना होता है उनको, तो एक टाइटल डला होता है और वीडियो प्ले होता है, या फिर टाइटल डला होता है, कुछ इमेजेस डली होती हैं। तो इन टाइटल ओनली स्लाइड लेआउट हम इसमें इमेजेस भी डाल सकते हैं, वीडियोस भी, क्लिप आर्ट सब डाल सकते हैं, लेकिन टाइटल के साथ। Blank. A blank slide layout is often used when a picture or other graphic object that needs no further information will be inserted to cover the whole slide. Content with caption. ब्लैंक में सिर्फ आप टेक्स्ट डालते हो, कुछ भी पिक्चर्स विचर्स कुछ नहीं डालते हम। ब्लैंक स्लाइड लेआउट का यूज़ होता है सिर्फ जब हमको कंटेंट प्लेस करना होता है। This layout is used to place content, most often a graphic object such as a chart or picture, on the right side of the slide. The left side is used for a title and text to describe the topic. As you can see here the layout, click to add title। यहाँ आप टाइटल डाल सकते हो, उसके नीचे उसका कंटेंट लिख सकते हो और राइट हैंड साइड पे कुछ भी इमेज वीडियो वगैरह जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो। Topic or object. Picture with caption. The right part of the slide is used to place a picture. The left side is used for a title and text to describe the topic or picture. Using title and content layout. Open MS PowerPoint and take a blank presentation. A new presentation of single slide with title slide layout appears. On Home tab in Slides group, click on Layout button. A list of slide layouts appears. Click on Title and Content Layout option, or you can insert a new slide of title and content layout. There are some iconic images at the center of the content area. These are the links to insert objects, table, chart, smart art. Online picture and video in the slide. Now, let's start inserting the objects in the slide using these icons. Following steps are in continuation with inserting the title and content slide in the presentation. Good morning, children. Class shuru kare? In table. You know that tables are used to in the form of rows and columns. It is very useful in organizing and representing the data in an effective way. The steps to insert a table on the slide are: after the first 3 steps, on title and content slide layout, click on table icon. The insert table dialog box appears. Enter the required number of columns and rows and click on OK button. ओके, सो टू इंसर्ट अ टेबल व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है अपनी प्रेजेंटेशन में तो आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाओगे। होम टैब में आपके पास आपका जो टाइटल बार होता है उसके नीचे आपका रिबन सेक्शन होता है, उस सेक्शन में आपके पास एक ऑप्शन होता है इंसर्ट का। जहाँ आपके पास होम होता है वहाँ पे इंसर्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। उस इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करोगे, आपके पास टेबल ऑप्शन अवेलेबल होगा। टेबल पे आप क्लिक करोगे, आप जितने रोज़ और कॉलम्स चाहो उतने रोज़ एंड कॉलम्स का आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में। Inserting chart. A chart is the pictorial or graphical form to represent the data. When you need to describe the relation between 2 or more sets of values in your presentation, charts are probably your best option. The steps to insert a chart in the slide. दिस चार्ट इज़ बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि पिक्टोरियल फॉर्म में होता है। व्हाट इज़ पिक्टोरियल फॉर्म? जब हमको कोई डायग्राम बनाना होता है, कुछ प्रेजेंट करना होता है जिसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक फ्लो होता है, देन इन दैट केस वी यूज़ टू क्रिएट चार्ट्स। तब हम चार्ट्स बनाते हैं, जैसे हम डायग्राम से बनाते हैं ना स्टेप वाले, वैसे ही उस पर्पज़ के लिए हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं। नाउ सी द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो टू इंसर्ट चार्ट। After the first 3 steps, on title and content slide layout, click on chart icon.
Or on Insert tab in Illustrations group, click on Chart button. The Insert Chart dialog appears. Select the chart type in the left pane and the subtype of the select chart in the right pane. For example, select the column option in left pane and its first subtype in the right pane. Click on OK button. The chart is displayed with a data sheet in MS Excel that contains the default data on which chart is created. Change the default data. To change the data in the sheet, do the following. Click on a cell and type the new data. This action will replace the old data with new data. For example, click on A2 cell and type petrol. Press down arrow key and type D. Generally, this type of charts we used to insert in your maths. In statistics, you used to have these type of charts. Okay, this is used to represent some values in pictorial form, in graphical form. Easel. As you change the data in data sheet, the column in the charts changes accordingly. After entering the data, close the data sheet. See the figure that follows for further reference to enter the data. Formatting the chart. Once the chart is inserted in the slide, it can be formatted by changing its title, bar, line colors, border style, data series, etc. Inserting Smart Art Graphic. A Smart Art Graphic is a visual representation of your information. What is Smart Art Graphics? Smart Art Graphics स्मार्टली अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। जब हमको कोई अपना आइडिया प्रेजेंट करना होता है, कुछ डायग्राम शो करना होता है, कुछ हमको समझाना होता है थ्रू डायग्राम, किसी चीज़ का एक फ्लो होता है, एक सीक्वेंस होता है, जैसे फ्लो चार्ट होते हैं। ओके, जैसे हमारे CPU का अगर हम बात करें, CPU का जो मेमोरी यूनिट होती है, ALU होती है, ये सारे डायग्राम को कुछ चीज़ हमको पॉइंट वाइज लिखना होता है डायग्राम के फॉर्म में, देन इन दैट केस वी यूज टू पुट अप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स. To effectively communicate your message or ideas, Smart Art allows you to communicate information with graphics instead of just using text. Traditional bulleted points can be transformed into eye-catching Smart Art graphic. The steps to insert a chart on the slide are: after the first 3 steps, Now see the steps to insert smart art graphics. on title and content slide layout, click on Smart Art graphic icon. Or on Insert tab in Illustrations group, click on Smart Art button. The Choose a Smart Art graphic dialog appears. There are a variety of smart art styles to choose from, which you can use to illustrate many different types of ideas. Select the Smart Art layout in the left pane and its subtype in the right pane. For example, select Cycle in the left pane and Basic Radial on the right pane. Click on OK button. The selected Smart Art graphic is inserted in the slide. Click on the text on the inserted Smart Art graphic one by one and enter your text. Hey, what's new? Changing Smart Art graphic layout, style and color. After inserting a Smart Art graphic, its layout, style and color can be changed. Steps to change the layout, style and color of Smart Art graphic are: select the Smart Art graphic on the slide. A set of Smart Art tools appears on the ribbon. Click on Design tab. Changing the layout. Click on drop-down arrow of Layouts. Click on layout that you want to change. Changing the styles. Click on drop-down arrow of Smart Art Styles and select the style of the Smart Art graphic from the list. Changing the colors. Click on Change Colors button and click on Required option. See the changes on the selected Smart Art graphic on the slide.
Formatting SmartArt graphic shape style. Steps to format the SmartArt graphic are: select the part of SmartArt graphic on the slide. A set of SmartArt tools appear on the ribbon. Click on Format tab. Click on drop-down arrow of Shape Styles. Select the required option. See the changes on the selected SmartArt graphic on the slide. Inserting picture. You have already learned about inserting a picture through Picture tool from Insert tab in previous class. Let's recall this topic. The steps to insert a picture in the slide are: after the first 3 steps, on Title and Content slide layout, click on Insert Pictures icon. The Insert Picture dialog box appears. Locate and select the picture and click on Insert button. Picture is inserted in the slide. This we have already learned about how to insert picture. आपने Word में भी पढ़ा है, same process, same steps हैं, and हमने PowerPoint में भी देखा है कि how to insert a picture. Inserting video. Video can be inserted from a file in your PC or online from web in the slide. Here you will learn about inserting a video from a file. The steps to insert a video in the slide are: after the first 3 steps, on Title and Content slide layout, click on Videos icon. Select From a File option in the Insert Video dialog box. Locate and select the video and click on Insert button. A black rectangular area is inserted in the slide in which the video will be played. Hover the mouse over the black rectangular area. The controls to play the video are displayed. Click on Play button to play the video. Inserting audio. You can insert audio music in the slide. The steps to insert or add an audio are: select the slide on which you want to add the audio file and click on Insert tab. In Media Group, click on Audio button and select Audio on My PC option. The Insert Audio dialog box appears. Locate the audio file and click on Insert button. A sound icon appears on the slide and Playback tab activates on the ribbon. On Playback tab in Audio Styles group, click on Play in Background button. Now run the slideshow. The inserted audio file will run automatically. Inserting a photo album. A PowerPoint photo album is a presentation that you can create to display your personal or other photographs. You have learned about inserting a picture in the slide. Steps to create a photo album are: open a new blank. See the steps how you can create your photo album and you can insert that in your presentation. Okay, we have seen how to insert the pictures. Okay, now you have to learn how to insert a photo album. See the steps properly. Presentation. On Insert tab in Images group, click on Photo Album button and select New Photo Album option. The Photo Album dialog box appears. Click on File or Disk button. Locate and select the image files that are to be added in the photo album and click on Insert button. The selected pictures are shown in a list in Pictures and Album section in Photo Album dialog box. You can select and move up and down the order of the picture or remove the unwanted pictures here. Click on Create button. The selected photos are adjusted on the slides. Now, the photo album can be run as a normal slideshow.